ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். நேற்று ராமச்சந்திர மூர்த்தியுடைய திருக்கல்யாணத்தை சேவித்தோம். இதோ அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீராமா ஜெயராமா ஜெய ஜெய ராமா என்று நாமும் அந்த பகவானை இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். நேற்று ராமச்சந்திர மூர்த்தியுடைய திருக்கல்யாணத்தை சேவித்தோம். இன்று அந்த கோதண்டராம சுவாமியுடைய பட்டாபிஷேகத்தை சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த கோதண்டராமன் 14 ஆண்டு வனவாசம் சென்ற பிறகு அந்த ராமணனை தங்க சிம்மாசனத்திலே அமர வைத்து குருவான வசிஷ்டர் மகாமுனிவர் கையால் சகல நதி ஜலங்களையும் மந்திரமும் மங்களவாதியுடன் கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரு என்று அந்த ராமனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதே ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம். இந்த பட்டாபிஷேகம் செய்யும் இந்த நன்னாளிலே வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேக சர்க்க பாராயணம் செய்வதால் பகவான் மங்களாஜதனம் மரே वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाभिरामं श्रीरामं भोजो भोजो नमाम्यहं रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं केन दूत्रतो समस्तवेदार्थविदे विघनदे नमः पुत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं गच्छत्तरे कृतो पुत्रं वैघानदं वन्दे भगवत्कर्मदूतगा नारायण पिता यस्य माता चापि हरिप्रिया वादिमुनयस्य शिष्यारस्मै श्री विघनदे नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री विघनदे नमः हरित्यत्रिगच्छभ्यो नमः भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि भगवान् मन्यता अपक्रामन्त भूतानि पिताचा प्रेतगुप्त्यका वेदात्र वसन्ते ते देवता उपविशन्तरा अपदर्पन्तु गे भूता भुविदं स्थिता भूता विक्तकर्तारस्ते किञ्चन वाक्नया हरे आसनमन्त्रस्य दिव्याहमेरो प्रचरति छन्दः रमो देवता आसने विनियोगः त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पञ्चधारयमान् देवी पवित्रं कुरुता धनो एष जगदाधारमनन्तं कूर्मरूपिणा आसनस्य विशुद्ध्यर्थम् आत्मानन्दं भजे हरिम् अनन्तासनाय नमः योगासनाय नमः विमलासनाय नमः कूर्मासनाय नमः नमस्य परब्रह्मार्षिः देवी गायत्री छन्दः आत्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ शुभः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सख्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूत्ववत्सवरो अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोर्दक्षिण दिग्भागे महानद्योर्मध्यदेशे भगवदालये भगवत्सन्निधौ प्रभवाषट् संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां स्मृतौ वासरः मखा नक्षत्रयुक्तायां भृगुवासरयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं गुण विशेष विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः पट्टाभिषेक महोत्सवाख्यंच कर्मणि वृच्यर्थं शांत्यर्थं अभ्युदयार्थं च
सुपुण्याहं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं कलचाराधनं करिष्ये ॐ दारासु सप्तसु च मानसेषु सरस्वरित्सु परिपूरकेषु विगन्धन् प्रतिपादयत्ये गृणामि दत्तागं तुदिरगं तु धर्मा शिवाशिवाशिवतमाशान्ताशान्ततमाशुभाशुभतमा पोता पोततमा पुण्या पुण्यतमा मेघ्यामेघ्यतमा अमृता अमृतरसा ब्रह्म पवित्रेण भूता दुर्गस्य रश्मिः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावापत्पदवापोऽमृतवाप अन्नमापः सम्राडापो विराडापत्पराडापच्चन्दागुत्यापो ज्योतिगुत्यापो यजोगुत्यापत्सत्यमापत् सर्वा देवता आपो ऊर्ध्ववत्सुवरापवो एतदं वरुणजे सहस्रं यक्षजात्पाशावतता पुरुत्रा एभ्यो न इन्द्रत्वविदोद विट्टरविट्टे देवामञ्चन्तो मरुदत्वत्या कुम्भे वरुणमावाहयामि वरुणमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणाय नमः वाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः औपचारिकस्नानं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः प्रदेदते नमः परदराय नमः परदे नमः वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि श्रीचन्दनं समर्पयामि वरुणाय नमः परिमलधूपमाग्रापयामि दीपोऽयं प्रतिगृह्यताय नमः दीपं दर्शयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि आगमनीयं समर्पयामि फलोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि धूपदीपराय विद्महे पादहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् नमः आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं शङ्खकेतं तपत्पर्दवाहनो पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमक्षरे वैराजन्ते सुहृदन्निदत्तामे दत्तान्तरितान्तराजो कारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि गोत्रवती मावाहयामि गोत्रवती जिजासीत श्री विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः स्नानं समर्पयामि लोकवस्तोत्तरीयाभरणकरणार्थमक्षदान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः हराय नमः ज्ञानभाजने नमः गजायै नमः परिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि अग्निं धोतं वृणेमहे होतारं परिमलधूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि अहमद्विप्रथमजारुतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतजनाभिः दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि फलोपहारं निवेदयामि समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि राजा भगवान सर्वकर तस्मान्नामुपादीनकर्मणां विक्रान्ते बुद्धे विज्ञान परिजमाप्यजापरिवारस्य विश्वक्सेनस्य भोजना ॐ भवद्वनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये पुण्याहं करोमि सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु तेजः वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वातीतजः वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वातीतजः वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नायतो विश्वर्विचक्रमे
पृथिव्याः सप्तधामभिः विचक्रमे त्रयधारदेवना मूढमध्यपागुं सुरे पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् कर्माणि वर्जयतो प्रधानि वत्पदे रज्जयुज्यत्सखा विष्णो परमपदगुं तदा पच्यन्ते जोरजः देव चक्षुरा ततो प्रादो विपण्यवो जागृभागुं दस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदात् त्रिविनोदस्तुरस्य त्रिविनोदातरस्य प्रियं जदे सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविता धरात् सवितारत्सवतु सर्वतां सवितानो राजतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नाङ्केतुरुददामेत्यग्रे देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः चिन्नजापदं दीतविद्योत्परं ते मे अप्यागाम्यानि सुजात प्रोर्वधीतिरदीर्घमायुः देव तरदो वर्तमानश्च हे मन्तान् शतमुपजन्तान्द्राग्नेतविता बृहस्पतिस्करायुराविषेमं पुनर्दुः देवावतवस्तों जातश्च तस्रो देवेरदरात्रविष्ठा यक्लम्बान्तरसपरस्तात् संवत्सरेण ममृतक् स्वस्ति हिरण्यरोपस्य हिरण्यचन्द्रगवाण्डवात्सेत हिरण्यवर्णः हिरण्यजात्पर्योने निषज्जा हिरण्यदाददत्यन्नमस्मै यामस्तोमं धनुजा भवाजमानो मन्त्रं दरदेहोपजातं यशोणवक्वं मधुघोष्पन्तरा भूतांशो अस्तिनो काममप्राहर्षन्त्वा विदन्त्वा पुनरागा पुनर्नवा सर्वाङ्गः सर्वो ते चक्षुः सर्वभागश्च देविनो रमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाजोदजा विष्णुगुं सरस्वती गोतवितारं च वादिनो मगो राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुगुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिन्द्रा वरुणा सोमरसमुद्रुप्तो राजस्पोषं यजमाने सुदत्तं प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मात् दत्तं दीर्घायुत्पाय प्रतिदन्नायुः राजसृज आनिर्जाजसृजं वजोजरदृभ्यो ददाति वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासमिधामृतद्रो गङ्गोर्यासिनी बाले जारागाजा सरस्वती इंद्राणी मत्पऊतके वरुणानी स्वस्तके हृदा कीर्णामन्यमानामर्त्यं मर्त्यो जोहवे मे जातवेदो यतो अस्मादेः प्रजापयक्ते अमृतत्वमस्यामे तगोतकृते जातवेदवलोकमग्ने कृणवस्यो नमस्मिरगोधपुत्रं वीरवन्तं गोमन्तको रयं न ददे स्वस्ति नरिज प्रजां मे गोपाजामृतत्वाय दीवसे निष्यमानामृते सत्ये प्रतिष्ठिता रामानं पृथिवीं यामुने हतगुं सुतरमाणमतिदिगुं सुप्रणीतिं देवेन्नावकत्परित्रामनागतमस्रवन्ति मारुहेमा स्वत्वगे आयुधाय शतवीर्याय शतोददेभिमातिशाहे सतयोनस्तरदो अदीतानिन्द्रो नेभदतिदुरानि विश्वा दक्षिणावदामिति मानचित्रा दक्षिणावदान् दिवि सूर्यासः दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्त प्रकृतन्न आयुः रङ्गर्णे विष्णुनयामदेवाः भद्रं पश्येमारङ्गैः दुष्टवागो दुष्टनो विरविडेम देवगिदं यदायुः नदरदां देवाजत्राणश्चक्राजरसन्तनो नादो यत्र पदरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षदायुर्गन्तो अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितो नक्षत्रं तत्पकुर्वेदापक्षुषा सूर्यवदेति नक्षत्रं नजते यावदत्र सूर्यो गच्छेत् जगन्यं पश्येत् तावद् कुर्वेद यत्कारी स्यात् याहदेव कुरुते ओम भूः अज्यमया पूर्वोक्ते वंशे विशिष्टायामस्यान् सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री कोदंडरामस्वामिनः पट्टाभिषेक महोत्सवाख्यंचकर्मणि स्थलशुच्यर्थं द्रव्यशुच्यर्थं मण्डपशुच्यर्थं सर्वोपनशुच्यर्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु
इन्द्रो वृत्रश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः अद्यमया पूर्वोक्तेव विशिष्टेवं गुणविशेष विशिष्टायाम् अस्यां सुपतितो वैघांस भगवच्छास्त्रोक्त क्रियमाण सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः पट्टाभिषेक महोत्सवाख्यंचकर्मणि सज्जोंकुरार्पणाख्यंचकर्मणि रक्षाबंधनाख्यंचकर्मणि आघाराख्यंचकर्मणि स्वामिना वस्त्र समर्पणाख्यंचकर्मणि किरीटधारणाख्यंचकर्मणि बहुमानाख्यंचकर्मणि उक्तहोमाख्यंचकर्मणि स्थलशुच्यर्थं द्रव्यशुच्यर्थं मंत्रशुच्यर्थं सर्वोपनशुच्यर्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्पहप्तेर्नमदो मसत्यामित्रं देवं मित्रदेयन्नो अनुराधान विषावर्धयन्तः तदञ्जीवेम शरदत्तवीराः त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागं चित्रेण धवनानि मे लोकाः आरभ्यामेव तत्वीर्य एतु लोकेषु प्रतिष्ठति अद्य मया पूर्वोक्तेवं विशिष्टायामस्यां सुपथितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयपदे पुरुषोत्तमस्य वैघांस भगवच्छास्त्रोक्त क्रियमाण सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः पट्टाभिषेक महोत्सवाख्यंचकर्मणि स्थलशुच्यर्थं मण्डपशुच्यर्थं सर्वोपनशुच्यर्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरध्यताम् वृद्धिं भवन्तो कर्मरध्यताम् वृद्धिं भवन्तो समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे ददातना यो वत्स्यपदमोरजस्तस्य भाजयते हनः तस्मारङ्गमामोयस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयदातनः हिरण्यवर्णास्तुतजोपावकाया सुजातः कस्य भोजास्मिन्द्रः प्रिया गर्भं दधिरे विरूपास्तान आपश्यक्कुस्यो न भवन्तु सागुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृदेव पश्यञ्जनाना यासां देवादिविगृह्णन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयदोऽन्तन्तशुक्रास्तान आपश्यक्कुस्यो न भवन्तु तेन माजक्षुदापस्य वजातनवापस्पृशदत्वचं मे सर्वागो अग्निगुं रप्तुदो हवेवो मयवर्चो फलमोजो निधत्ता सम्प्रजतीरः वनददाहते सकार्यो नामस्तदा वो नामानि सिन्धवः प्रेषिता वरुणेन दासी भगुं समवल्गता आप्नोदिन्द्रो वो यते तत्पादापो अनुत्थना रामक्कस्यन्दमाना अवीवरदवोहिकम् इन्द्रो वशक्तिर्देवे तत्पात्वार्नाम वोहिको एको देवोऽप्यतिष्ठच्छन्दमाना जदावशम् उदानि शर्महे तदस्पादुदकमुच्यते आपो भद्रा कृतमिदाप आजुरक्ति सोमभिप्रत्यापजित्ता तीव्ररसो मधुपचामरङ्गम आमा प्राणेन धावर्त्यधागन्न रङ्गे भेजानो अमृतस्य हिरण्यवर्णाद्रभङ्गिधावः हिष्ठामजो भवस्तानवोढ्ये ददातनः हेरणाय दक्षसे सोमस्य वदमोरदस्तस्य भारयते हनः सदैरवमातरः रङ्गमामभोजस्य क्षजाय जिन्वथा आपो जनयधातरः यस्वान्तरिक्षेरस्व पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च तमधि ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्व वर्जनः मित्रेण विचर्षणिः तमादेव जना पुनन्तमनवोधिया विश्वाजवः वेद पवित्रवतो मित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यतो कृत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चुषि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च ब्रह्म पुनीमहे विश्वदेवी पुनते देव्यागातु यस्ते भक्वे तनवो वेदपृष्ठा वदन्तः सतमाध्येषु परजोरजेन वैश्वानरो रत्नभिर्मा पुनातु प्राणेने चिरोमयो भू यावा पृथिवी पयसापयोभिः यावदे जक्यते मा पुनीता वसिष्ठैरदेवमन्वभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा देवा पुनदा येनापो दिव्यं ततः दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानेरध्येते समृतगं रसो पुंसभूतमस्नादे मातरिष्मणा पावमानेर्यो अध्येते समृतगो रसो अस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगो सर्पिर्मधूरगो पावमाने स्वस्य जने सुदुगाहि पयस्व
सम्प्रदारदः ब्राह्मणे स्वमृतगोहितो पावमानेऽर्तिषन्तु नः लोकमधो कामान् समर्थयन्तु नः देवैः समावृताः पावमाने स्वस्य जने सम्प्रदारदः ब्राह्मणे स्वमृतगोहितो तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण आवमान्यः पुनन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं स्तोत्यामगो हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वजा ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रत्वनीति तहमः पुनादो सोमत्वत्या वरुणः समीक्ष्य राजा प्रवृणाभिः पुनादु वेदा मोक्षयन्त्या पुनातु यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तुनः मानुजेभ्यः वन्दिगातु भेषजो अस्तुत्यपदे चतुष्पदे शान्ति शान्ति देवार्पुजो मात्रयन्ता दक्षिणायां दिजिमादा पितरो माट्टयन्तां प्रतीत्यां चतुरः पदवो माट्टयन्तामुदीत्यां नित्यापवोषधयो वनस्पतयो माक्षयन्तो ऊर्ध्वायां जगत्संवत्सरो जगत्पतिरमाक्षयन्ताघोदराजनेर्नागेभ्यो माक्षयन्तो वरुणाय नमः विष्णुक्सेनाय नमः पुनःपाद्यमर्घ्यमाजमनेयं समर्पयामि नमः विष्णुक्सेनाय नमः समर्पयामि समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः इदानीं शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஜெய் ஸ்ரீராம். பக்தர்களே, இந்த கோதண்டராம சுவாமியினுடைய பட்டாபிஷேகம் திருப்பதியிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனை, சித்தி புண்ணியாக வாசனம் மற்றும் கலச பூஜையை சேவித்தோம். அந்த ராமனை தங்க சிம்மாசனத்திலே அமர வைத்து குலகுருவனான வசிஷ்டர் மகாமுனிவர் கையால் சகல நதி ஜலங்களையும் மந்திர மங்களவாதியுடன் அதை ஸ்ரீராமனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதே ஸ்ரீராமா பட்டாபிஷேகம். இந்த பட்டாபிஷேகம் செய்யும் இந்த நன்னாளிலே வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேக சர்க்க பாராயணம் செய்வதால் நமக்கு ராஜ்யம் வேண்டுமானால் ராஜ்யம், அது போன்ற சகல சௌபாகியங்களும் கிட்டுமாம். ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதையே நமகா என்று அந்த பகவானை நாம் இப்போது சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த 14 ஆண்டுகளும் பரதன் தான் ராமனுடைய பாதுகையை வைத்து நாட்டை ஆண்டு வந்தார். எவ்வளவோ இன்னல்கள், எவ்வளவோ துன்பங்கள், அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ராமபிரான் உடைய பாதுகங்களை கொண்டு வந்து அரசபையிலே அந்த அரசாட்சியிலே வைத்து அதன் பிறகு 14 ஆண்டுகள் எப்படியோ அந்த பாரதன் நாட்டை ஆண்டு வந்தான். பிறகு இஷ்வாக்கு குல சக்கரவர்த்திக்கு குல தீர்க்க ஆயுஷுமான வசிஷ்டர் மகரிஷி இந்தியர்களை மனதையும் சமாதானம் செய்து சகல பிராமணர்களுக்கும் அனுமதி பெற்று ஸ்ரீராமனை சீதா தேவியுடன் ரத்னமான சிம்மாசனத்திலே உட்கார வைக்கும் கைங்கரியம்தான் இப்போது நாம் சேவித்திருப்பது, அதாவது பட்டாபிஷேகம் கைங்கரியம். இதோ திருமலை சாற்றுதல் என்ற கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாம் இதை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம். ब्रह्मणे नमः इंद्राय नमः यमाय नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः सोमाय नमः नानाविधपर्वतपुष्पार्चनं समर्पयामि आवाहसत्सङ्करणदेवताभ्यो नमः विद्यश्रीचन्दनमालेपयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि इंद्राय नमः एतान् वेदान् वापयामि यमाय नमः वरुणाय नमः
कुबेराय नमः सोमाय नमः वेदान् बीजानवापयामि दिशां पतिं नमस्यामि सर्वकामफलप्रदः कुर्वन्तु कर्म कुर्वन्तु ततं शुभम् निवेदयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओम मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ति तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलो चंदनं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि धूपाग्रविनोदुत्य धूपाधिवासिता ब्रह्म पवित्रेण पूर्णा सूर्यज्जरद्भिः धूपमाग्रापयामि शुभ्राज्योतिष्ठदेवानां तेजस्प्रभः भास्करो महादेवो दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् दीपं दर्शयामि समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फलोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि भुजङ्गाय विद्महे सहस्रफलाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् वेदाय नमः विराजनान्तं सर्वोपचारान् समर्पयामि स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगस्वस्ति देव्यतितरनर्वणः स्वस्तिपूषातुरोदुधातनस्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तजे वाजमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति पवनत्यजस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यादो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तजे वैश्वानरो मधुरग्ने स्वस्तगे देवावन्द्रभव स्वस्तजे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं भजः मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्था मनुजरेम सौर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ततचाग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति जनं तार्क्षमरिष्टदेवि महद्भूतं दायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रजगं तमच्च बृहत्यजो नावमिवारुहेमा महामुजवाङ्गिरसङ्गजं जस्वस्यात्रेजं मनजाजतार्क्ष्यम् प्रगतवानिचरणं प्रपद्ये स्वस्तिनो बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभं शुभं वेदाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि கோதண்டராம சுவாமியை நமஹ. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷை பூஜையை செய்து கொண்டார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ராமபிரானை உடைய பட்டாபிஷேகத்தை சேவிக்கத்தான் இதோ இங்கே அந்த கைங்கரியத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். சிரஸ்யஞ்சலி மாதாய கைகேயானந்த வர்தனஹ பாபேஷ பரதோ ஜேஷ்டாம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம். பரதன் தலைமேல் கைகூப்பி மகாபாவனான தன் தமையனை பார்த்து இவ்வாறு கூறுகிறார். கைகேயி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு முகம் மலர்ந்து பரமானந்தம் அடைந்தாள். சுவாமி, தாங்கள் இந்த ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று வனவாசம் செய்ததால் என் மாதவின் மனதை சந்தோஷப்படுத்தினீர்கள். பிறகு சித்திரக்கூடத்தில் இதை என்னிடத்தில் அடைக்கலமாக வைத்து கோசல ராஜ்யத்தை இப்பொழுது தங்களிடத்தில் மறுபடியும் கொடுத்து விட்டேன். ஆனால் நான் கேட்ட பொழுது நீ கொடுக்கலாம்.
அதுவரையில் வைத்துக் கொண்டு இரு. நான் அயோத்தியில் சகல போகங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு சுகமாய் வசிக்கிறேன். நீயே ராஜ்யத்தை ஆண்டு வா என்று சொல்வீர்கள். பூரண பலமுள்ள ஒரு எருது தனியாய் சகாயம் இல்லாமல் சுமந்து வந்த பாரதத்தை சிறு கன்றுக்குட்டி சுமக்குமா? அப்படியானால் இதுவரையில் எப்படி ஆண்டு வந்தாய் என்று கேட்பீர்கள். ஆற்றில் ஜலத்தின் வேகத்தை தடுப்பதற்கு மரக்கிளைகள், வைக்கோல், மரம் முதலிய பத்திரங்களால் உறுதியாய் ஆன விட்டால் அங்கங்கே சிறு துளைகள் ஏற்பட்டு அவைகளின் வழியாக ஜலம் பிரகவித்து முடிவில் அணையை அடித்து கொண்டு போவது போல் இந்த ராஜ்ய பாலனம் சுலபம் அல்ல. ஆளுகின்றவனுக்கு உத்தம குணங்களே என்று பலமான அணை இல்லாவிட்டால் ராஜ்ய ரகசியங்கள் சீக்கிரத்தில் வெளிப்படும். ஆனால் என்னை போல் நீயும் பிரஜைகளை உத்தம குணங்களால் வசப்படுத்த கூடாதா என்பீர்கள். உத்தம அஸ்வநடை கழுதைக்கும் நடைக்கும் ஊமை உண்டோ? காக்கை ராஜ அம்சத்தை போலாகுமா? தாங்கள் போகும் வழியில் வேறு ஒருவர் அடி வைக்க முடியுமோ? ஆனால் நானும் உனக்கு சகாயமாக இருக்கிறேன். நீயே ராஜ்யத்தை ஆண்டு வா என்பார்கள் என்று இப்படியாக பரதன் கூறுகிறான். அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவிடம் அங்கே அயோத்தியிலே இது போன்ற விஷயங்களே நடைபெற்றன. அதேபோல் இப்போது திருப்பதி நகரத்திலே எழுந்தருளி இருக்கும் கோதண்டராம சுவாமியுடைய கோவிலிலே பட்டாபிஷேகம் கைங்கரியத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கோவில் விக்கிரகங்கள் அந்த ஜாம்பவனத்தினால் நிர்வாகம் செய்யப்பட்டது. வைகானச ஆகமம் விதிப்படி பட்டாபிஷேகம் கைங்கரியத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்தை பார்த்தோம். அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தையும் சேவித்தோம். இதோ சீதா சமைத்த கோதண்டராம சுவாமி லக்ஷ்மணை சுவாமிக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று ராமச்சந்திர பிரபுவை நாமும் இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். அந்த ராமச்சந்திரன் பிரபு அழகான புஷ்பங்களாலும் தங்க ஆபரண நகைகளாலும் விசேஷமாக அலங்காரம் செய்து தரிசனம் தந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கல்யாண மேடையிலே. பட்டாபிஷேக கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த கைங்கரியங்களின் முடிவுடன் ராமச்சந்திர பிரபுவுக்கு தலையிலே கிரீட்டத்தை வைத்து பாதுகைகளை கொடுத்து பாதுகா பட்டாபிஷேகம் என்ற கைங்கரியத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த பகவானை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா புருவா சந்தியா பிரபத்தியதே என்று கௌசல்யாவை நினைவு கூர்ந்து அந்த சுப்ரபாத சேவையை தங்களுக்கு செய்வார்கள். அதையும் கூட தங்களுக்கு சேவித்து மகிழ்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ராமபிரானை இதோ இப்போது சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். परमस्य पुण्य पद्माजनित्रे परमस्य वासः सूक्ष्ममुद्रावित्रं द्वयमानधानं सावित्ररूपं परमं पुण्यं नमः त्रिगे चातत्रिग आननिगायत्रिगं पयोतिरितृभ्यो ददाति वसानामृतत्वमाजन् भवन्ति दत्तादमिदानि दत्रो षण्णानि दत्तान्तपदोजहस्ता वयं पुरक्रे मृतये मृताय परमात्मा परमागतिः परं ब्रह्म परं योगं परमात्मानं मन्ये अदरं योगिरहमन्नं वायवे प्रथमः सप्तदानामूर्धावादो अन्यमदरज्यस्त्रिजं भूतारं वैरयन् बाहुरग्ने हव्यं मरुद्भ्यः विष्णुर्मां प्रक्षदो चक्रभूतं धनपूर्वकं चक्षुर्दक्षिणमपरं गदो देशे नन्दगारस्तात् पादुकिरन्तरे सुदरे प्रसादादिन्दो भया दुःखादिमो
वरुणो विक्रमा सर्वे रक्षन्तु तद्विष्णो परमं पदगुं तदा पश्यन्तु दूरयः दिवेव चक्षुरादतौ तत्तिप्रातो विपन्यबोधागृभागुं तत्समिल्तते परमं पदं मङ्गलं कोतरेन्द्राय महनीयगुणात्मने प्रवर्तितनोदाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ओम भुवस्यां श्री पदे पुरुषोत्तमस्य श्री सीताल हनुमत समेत श्री कोदंडराम स्वामिनः पट्टाभिषेक महोत्सव किंचकर्मणि आहारं करिष्ये एवं ये तोर्निन्द्रमस्तमाम शुद्धं कर्मणासभिषाहीनोमीन्द्रा विष्णु अवासस्पादे अस्य जुषेठाय यज्ञन्द्रवीणं च दत्तवरिष्ठैर्नः पतिभिः पारयन्ता विश्वासाञ्जलितारामदीनामिन्द्रा विष्णु कलशा सोमधाना प्रभाङ्गिरश्यस्य माना अवन्तु प्रसोमासो गीयमानासो अर्कैः इन्द्रा विष्णु मदपति मदानामा सोमैयातन्द्रवीणो दधानाम् संवामञ्चन्त्वक्तुभिर्मतीनां संस्तोमा आशस्यमानास उक्तैः आभामश्वासो अभिमातिशाः इन्द्रा विष्णु सुधवादो वहन्तु जुषेधां विश्वा हवानामतीनामुपब्रह्माणि शृणुतं गिरो मे इन्द्रा विष्णु तत्पानयाय्यं वां सोमस्य मदा उरुचक्रमाते अक्रूणतमन्तरिक्षं वरीयो प्राततं जीवसे नो रजांसि इन्द्रा विष्णु हविषा वावृधानाग्राद्वाधानमासारातहव्या घृता सुतीद्रवीणं धत्तमस्मे सामुद्रस्तः कलशः सोमधानाः इन्द्रा विष्णु पिबातं मध्वो अस्य सोमस्य दस्राजठरं गृणेथाम् आवामन्दांसि मतिरान्यग्मन्नुपब्रह्माणि श्रुतं भवं मे उभाजिज्ञतुर्न पराजयेथेन पराजिज्ञे कतरश्शनैनोः इन्द्रश्च विष्णो यदपस्फुरेतां त्रेधा सहस्रं विदधैरयेताम् परोमात्रा जातं वा वृथा नदते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभेदे विद्मरजासि पृथिव्या विष्णो देवत्वं पारमस्या वित्से न ते विष्णो जायामानो न जातो देवा महिम्नः परमन्तामापा उदस्तप्नानाकामृष्वं बृहन्तं दाधर्थ प्राचीं ककुभं पृथिव्याः इरावती धेनुमतिः भूतं सूर्यवसिरीवरोषे दशस्या यस्तप्ना रोदासि विष्णवेधेदाधर्था पृथिवीमभितो मयूखैः पुरुयज्ञाया चक्रतुर्लोकं जनयन्ता सूर्यामुषासामग्निम् दासस्य चित्पुषशिप्रस्यामाया जग्नधुं नरा पृथनाज्येषु इन्द्रा विष्णो दुम्भिता शम्बारस्य नवपुरो नवतिं च स्मभिष्टम् शतं वर्षिणः सहस्रं च शाकं हतो प्रत्यसोरस्य वीरान् इयं मानीषा बृहते बृहन्तो रुक्रमा तवसा वर्धयन्ति तदेवां स्तोमं विदधेषु विष्णो पिन्वातमिषो वजनेष्विन्द्राम् अशक्ते विष्णवासा कृणोमि तन्मे जुषस्वसि विष्टहव्यम् बद्धन्तु त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः
नूमर्तोदयते स निश्यन्यो विष्णावमुरुगायाय दाशात् प्रयः सत्रागामनासाय जात एतावन्तन्नर्यामाविवासात् त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रायुतामेव यावो मदिन्दाः पर्चो यथा सुवितस्य भूरे अश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः तिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमेष दर्चा सम्महित्वा प्रविष्टोरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेषं ह्यस्य स्तवीरस्य नाम विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनोषेदशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीलयोजना सौरुक्षितिं सुजनीमाचकार प्रदत्ते अद्य श्रीपिपिष्टनामार्यः शंसामिभयुनानि विद्वान् तन्त्वा गृणामि तव समतौ यान् क्षयन्तमस्य रजासः परागे किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्रयद्वा वक्षेशे पिपिष्टो अस्मि मा वर्पो अस्मदपागुह एतद्यदन्यरूपः समिदेव भूताम् वशत्ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे एजसस्वति पिपिष्टहव्यम् वर्धन्तु सुष्ठुतयो गिरो मे यूयं पातः स्वस्तिभिः सदा विष्णोन्नुकं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्काभायदुत्तारं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः प्रदद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कोचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषत्रिषु विक्रमाणे स्वधिक्षयन्ति भुवानानि विश्वा प्रविष्णावेशोषवे तु मन्मा गिरिक्षिता मृगायाय वृष्णे यैदं दीर्घं प्रयातं सधस्तमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः यस्य त्रिपूर्णा मधूना पदान्यक्षीयमाना स्वधया मदन्ति यवत्रिधातु पृथिवीमुदद्यामेको दाधार भुवानानि विश्वा तदस्य प्रियमभिपातो अस्यां नरो यत्रादेव यवो मदन्ति उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था विष्णो पदे पादमे मध्वरुत्साह तावां वास्तोऽन्युष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयासाः अत्ताह ददोरुगायस्य वृष्णः परमं परमवाभाति भूरि प्रवः पान्तमन्धासो धियायते महेशूराय विष्णावे चार्चता यासानो निपर्वाता नामदाभ्यामहस्तस्तदुर्वातेव साधुना त्वेषमित्था समरानं शिमीवतोरिन्द्रा विष्णु सुदपावामुरुष्यति यामर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कुशानोदस्तोरसनामो दृश्यताः ताईं बद्धन्ति मह्यस्य पोंस्यन्निमातरा नयति रेतासे भुजे दधाति पुत्रो वारं परं विदुर्नामा तृतीयमहीरोचने दिवः तत्तदिदस्य पोंस्यं गिलेमसेनस्य स्थातुरावृतस्यामेलुषाः यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरुक्रमिष्टोरुगायाया जीवसे द्वे इदस्य क्रमाणे स्वर्दृशो भिख्याय मर्त्यो भुरण्यति तृतीयामस्य न किराराधरिषति वयश्च न पदयन्तः पदत्रिणाः चतुर्भिः साकन्नामतिं च नामाभिश्चक्रन्न वृत्तं व्यतीन्द्रवे विपद् बृहच्छारीरो विविमानरुक्वाभिर्युवाको मानः प्रत्येत्याहवम् भवामित्रो न सेव्यो घृतासो दुर्विभूतद्यं न एव यावो सप्रथाः अधा ते विष्णो विदुषा चिदद्यस्तोमो यज्ञश्चराद्यो हविष्माता यः पूर्व्याया वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णावे ददाशतीम्
यो जातमस्य महतो महिब्रवत्से दुश्रवोभिर्युज्यन्त्यदभ्यासत् तमुस्तोतारः पूर्व्यै यथा विदर्तस्य गर्भम् धनुषापि पत्तना आस्याजानन्तो नामाचिद्विभक्तनमहस्ते विष्णो सुमतिम् भाजामहे तमस्य राजा वरुणस्तमश्विनाकृतम् सजन्तमारो तस्य वेधसाः दातारदक्षामुत्तममाहर्विदम् गजम् च विष्णुः सखेवाम् अपोर्नुते आयो विवाया सजथाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तारः वेधा आजिन्वत्कषधस्तार्यामृतस्या भागे यजामानमाभाजत सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राशीर्षा सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राशीर्षा सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राशीर्षेति सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः पुरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राबात् सहस्राबात् सहस्राक्षः पुरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राबात् सहस्राक्षः सहस्राबात् सहस्राबात् सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्राबात् सहस्राक्ष इति सहस्राक्षः सहस्रापादिति सहस्रपाद स भूमिं भूमिं स भूमिं विश्वतो विश्वतो भूमिं स भूमिं विश्वताः भूमिं विश्वतो विश्वतो भूमिं भूमिं विश्वतो भृत्वा भृत्वा विश्वतो भूमिं भूमिं विश्वतो भृत्वा विश्वतो भृत्वा भृत्वा विश्वतो विश्वतो भृत्वात्यदे भृत्वा विश्वतो विश्वतो भृत्वात्यदे भृत्वात्यदे भृत्वा भृत्वात्यादिष्ठदतिष्ठदते भृत्वा भृत्वात्यादिष्ठद अत्यादिष्ठदतिष्ठदत्यादिष्ठदशाङ्गुलम्बाशाङ्गुलमादिष्ठदत्यादिष्ठदशाङ्गुलम् अधिष्ठद्दशाङ्गुलम् दाशाङ्गुलमधिष्ठदधिष्ठद्दशाङ्गुलम् दशाङ्गुलमिति दशाङ्गुलम् पुरुष एवैव पुरुषः पुरुष एवेदमिदमेव पुरुषः पुरुष एवेदम् एवेदमिदमेवैवेदम् सर्वम् सर्वामिदमेवैवेदम् सर्वम् इदं सर्वं सर्वामिदमिदं सर्वं यद्यत् सर्वामिदमिदं सर्वं यत् सर्वं यद्यत् सर्वं सर्वं यद्भूतं भूतं यत् सर्वं सर्वं यद्भूतं यद्भूतं भूतं यद्यद्भूतं 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 यद्भूतं यद्यद्भूतं भूतं यच्च यद्भूतं भूतं यच्च यच्चा च यद्यच्च भव्यं भव्यं च यद्यच्च भव्यं च भव्यं भव्यं च भव्यं भव्यमिति भव्यम् उतामृतत्वस्यामृतत्वस्योतोतामृतत्वस्येषा न ईशानोऽमृतत्वस्योतोतामृतत्वस्येषा नः अमृतत्वस्येषा न ईशानोऽमृतत्वस्यामृतत्वस्येषा न यद्यदीशानोऽमृतत्वस्यामृतत्वस्येषा न यद् अमृतत्वस्येत्यामृतत्वस्य ईशानो यद्यदीशान ईशानो यदन्नेनान्ने न यदीशान ईशानो यदन्नेन यदन्नेनान्नेन यद्यदन्नेनाधिरोहत्यधिरोहत्यन्नेन यद्यदन्नेनाधिरोहादि अन्नेनाधिरोहत्यधिरोहत्यन्नेनान्नेनाधिरोहादि अधिरोहमीत्यादिरोहादि श्रिये जातो जात श्रिये श्रिये जात श्रिये श्रिये जात श्रिये
जातश्रिये श्रिये जातश्रिये श्रिये जातो जातश्रिया निर्निराश्रिये जातो जातश्रिया श्रिया निर्निराश्रिये श्रिया निरीयाये याय निराश्रिये श्रिया निरीयाय निरीयाये याय निर्निरीयाय श्रियं श्रियामियाय निर्निरीयाय श्रियं याय श्रियं श्रियामियाये याय श्रियं वयो वय श्रियामियाये याय श्रियं वयाः श्रियं वयो वय श्रियं श्रियं वयो आजरितृभ्यो आजरितृभ्यो वय श्रियं श्रियं वयो आजरितृभ्यः वयो आजरितृभ्यो आजरितृभ्यो वयो वयो आजरितृभ्यो दधाति दधातिरितृभ्यो वयो वयो आजरितृभ्यो दधाति जरितृभ्यो दधाति दधाति जरितृभ्यो जरितृभ्यो दधाति जरितृभ्य इति जरितृभ्यः दधाति दधाति श्रियं वसाना श्रियं श्रियं वसाना अमृतत्वममृतत्वं वसाना श्रियं श्रियं वसाना अमृतत्वं वसाना अमृतत्वममृतत्वं वसाना वसाना अमृतत्वमायन्नायन्नमृतत्वं वसाना वसाना अमृतत्वमायन् अमृतत्वमायन्नायन्नमृतत्वमामृतत्वमायन् भवन्ति भवन्त्यायन्नमृतत्वमामृतत्वमायन् भवन्ति अमृतत्वमित्यामृतत्वम् आयन् भवन्ति भवन्त्यायन्नायन् भवन्ति सत्या सत्या भवन्त्यायन्नायन् भवन्ति सत्या भवन्ति सत्या सत्या भवन्ति भवन्ति सत्या सामिथा सामिथा सत्या भवन्ति भवन्ति सत्या सामिथा सत्या सामिथा सामिता सत्या सत्या सामिता मितद्रौ मितद्रौ समिथा सत्या सत्या सामिथा मितद्रौ समिधा मितद्रौ मितद्रौ समिधा सामिधा मितद्रौ समिधेति समिधा मितद्राविति मितद्रौ ॐ मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निज्ञाराय स्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय मामो देवताः सजन्ताम् अपां पृष्ठमासि योनिरग्नेः सामुद्रमभितः पिन्वामानम् वर्धमानो महां आजपुष्कारे दिवो मात्राय वरुम्णा प्राधस्वा ब्रह्माजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो वेन आवः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठाश्चतश्च योनि मसादश्च विवाह हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदा आधार पृथिवीञ्जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रप्सश्च स्कन्दपृथिवीमनुज्यामिमं च योनिमनुजश्च पूर्वाः समानं योनिमनो सञ्चरन्तं द्रप्सञ्जोहोम्यनु सप्तहोत्राः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इशावो यातु धानानां ये वा वनस्पतिगरणो ये वा वटेषु शेरादेतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये वामीरो ओचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः कृणुष्व वाजः प्रसीदन्न पृथ्वी याहि राजे वामावां इभेन तृष्वेमनु प्रसीदिन्द्रोणानोस्तासि विद्या रक्षसस्तभिष्ठैः तव भ्रमासा आशुया वादञ्जनस्पृशधृशदाशोषोजानः तपोऽग्निष्यग्ने जुह्वा आपतङ्गानसंवितो विसृज विश्वाकुल्काः प्रतिस्पश विसृजतोर्णे तमो भवापाजर्विष अस्य अरब्धः जानादोरे अघशक्काशो यो अन्यज्ञे मा कृष्णे
व्यथिरादाधर्षेत उदग्ने तिष्ठ प्रज्ञादानुष्वन्यमित्रा ओषधात्तिग्महेते ज्ञानो अराधिक्या समिधानचक्रेणीजादन्धक्ष्यदसन्नजुष्टम् ऊर्ध्वभावप्रतिविद्याध्यस्मदाविष्क्रोणुष्व दैव्यान्यग्ने अवस्थिरादारोह्यातु जोराञ्जानिमजामिं प्रम्रोणेः शत्रून् अग्ने स्वा तेजसा साधयामि శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి పట్టాభిషేక సంకల్పాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాము. భక్తులందరూ కూడా పలకవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రామాయ రామాయ రామభద్రాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే వేదసే రఘునాథాయ రఘునాథాయ నాథాయ నాథాయ సీతాయాః సీతాయాః పతయే పతయే నమః నమః అస్య అస్య దేవదేవస్య దేవదేవస్య భగవతో భగవతో నారాయణస్య నారాయణస్య శ్రియపతేః శ్రియపతేః పురుషోత్తమస్య పురుషోత్తమస్య శ్రీ సీతా శ్రీ సీతా లక్ష్మణ లక్ష్మణ హనుమత్ హనుమత్ సమేత సమేత శ్రీ కోదండరామ శ్రీ కోదండరామ స్వామినః స్వామినః అనుగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం అస్య యజమానస్య అస్య యజమానస్య మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోండి. గోత్రోద్భవస్య గోత్రోద్భవస్య నామధే మీ పేరు చెప్పుకోండి. ముందు పురుషుల పేరు, భర్త పేరు. నామధేయస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని ధర్మపత్ని సమేతస్య సమేతస్య మీ యొక్క సంతానం పేరు చెప్పుకోండి. సపుత్రకస్య సపుత్రకస్య సపుత్రికాయాః సపుత్రికాయాః క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య విజయ విజయ వీర్య వీర్య అభయ అభయ ఆయుః ఆయుః ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం లక్ష్మీ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం ఆమోద ఆమోద సమ్మోద సమ్మోద ప్రమోద ప్రమోద వైకుంఠాఖ్య వైకుంఠాఖ్య లోకేషు లోకేషు సాలోక్య సాలోక్య సామీప్య సామీప్య సారూప్య సారూప్య సాయుజ్య సాయుధ్య ఫలసిద్ధ్యర్థం ఫలసిద్ధ్యర్థం భృగ్వాదిభిః భృగ్వాదిభిః కాశ్యపాదిభిః కాశ్యపాదిభిః శాబ్దకోటి సాబ్ధకోటి ప్రమాణేన ప్రమాణేన శ్రీవిఖనో శ్రీవిఖనో మునీంద్ర మునీంద్ర మతానుసారిభిః మతానుసారిభిః వైఘానస వైఖానస భగవత్ భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ శాస్త్రోక్త మార్గేణ పట్టాభిషేక పట్టాభిషేక మహోత్సవం మహోత్సవం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన అహం అహం కారయిష్యే కారయిష్యే సర్వం సర్వం శ్రీ శ్రీ రామచంద్రార్పణమస్తు రామచంద్రార్పణమస్తు శ్రీనివాసార్పణమస్తు శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஜெய் ஸ்ரீராம். பக்தர்களே, கோதண்ட ராமசுவாமி ஆலயம் அதிகாரிகள் சங்கல்பத்தை கூறிக்கொண்டார். அதற்காக நாமும் இப்போது அந்த சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டு நம் வீட்டில் இருப்பவரின்
பெயரும் கோத்திரமும் கூறி பெருமாளிடம் நம்முடைய கோரிக்கைகளை விண்ணப்பிக்கலாம். அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமத்தை சேவித்தோம். विष्णो परमं पदं सदा वज्रन्ति घोरयः तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागो दत्तमिन्द्रति परमं पदं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मङ्गलं कोदलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् अमीतमज्जहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् ஜெய் ஸ்ரீராம். பக்தர்களே, அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமத்தை சேவித்தோம், சங்கல்ப மந்திரத்தையும் சேவித்தோம். பின்பு அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு மற்றும் சீதா லக்ஷ்மண சமேத ஹனுமந்தனுக்கும் வஸ்திர சமர்ப்பணம் செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை நாம் திரையின் வழியே தரிசித்து அந்த பகவானுடைய திரு கருணா கடாட்சத்தை பெற்றுள்ளோம். அதற்கு பிறகு ராமபிரான் 14 ஆண்டு
வனவாசம் சென்று பட்டாபிஷேகத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக செய்கிறார் என்கிறார். ஜனக மகாராஜன் எப்படி பகவானுக்கும் அனைவருக்கும் கூட ஏராளமான கைங்கரியங்களை செய்து அந்த பிரஜைகளை கவனமாக பரிபாலனம் செய்து அவர்களிடம் நற்பெயர் சம்பாதித்தார். அதேபோல் பித்ரு வாக்கிய பரிபாலன் என்று கூறப்படும் அந்த ராமச்சந்திர பிரபு கூட 11 ஆண்டுகள் அந்த அயோத்தியில் பரிபாலனம் செய்து மக்களிடையே நல்ல பெயரை ஏற்படுத்தி கொண்டாராம். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி கோதண்ட ராமனாக இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டு இருப்பது அவருடைய பட்டாபிஷேக கைங்கரியத்தில். இதன் மூலமாக நாம் எத்தனை விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா? ஒரு வீட்டில் வளர்த்த மரம் விசாலமான கிளைகளுடன் அழகான புஷ்பங்களால் நிறைந்தும் ஒரு பழமாவது இல்லாமல் இருந்தால் அதை வளர்த்தவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? நமது பிதா 60,000 வருஷங்கள் வரையில் புத்திரன் இல்லாமல் அஸ்வமேதம், புத்திர காமேஷ்டி முதலிய யாகங்களை செய்து தங்களை பெற்றார். தாங்கள் லோகோத்தமனான அனந்த கல்யாண குணங்களுடன் வளர்த்து வந்தீர்கள். இந்த ராஜ்யத்தை தங்களிடத்தில் ஒப்புவித்துதான் செய்த பிரார்த்தனைகளின் பலனை அனுபவிக்கலாம் என்று அவர் நினைத்தாராம். இப்பொழுது சகல பூமண்டலத்தையும் தர்மமாக பரிபாலனம் செய்து தகுந்த உத்தம குணங்கள் தங்களிடத்தில் இருந்தும் வம்ச பரம்பரையை ஜேஷ்ட புத்திரர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த இந்த ராஜ்யத்தை தாங்கள் ஆளாவிட்டால் தங்களை பெற்று வளர்த்ததின் பிரயோஜனம் என்ன என்று கேட்டாராம். பக்தர்களே, சூரியன் மத்தியான காலத்தில் ஆகாச வீதியில் பூர்ண கிரகங்களுடன் சகல ஜகத்திற்கும் பிரகாசத்தையும் ஆயுளையும் கொடுத்து கொண்டு விளங்குவது போல் தங்களது பட்டாபிஷேக மகோத்சவம் பெற்று आवस्रजन्तस्निग्धानिविक्रीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रायस्तरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं पूज्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावः तां भावः जातवेदो लक्ष्मीमनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदं गावो दास्योऽस्मान् वृन्देयं वरुदानहं पद्मप्रिये पद्मिने पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय नाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोरगोले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रिये जातश्रियानिरीयाज श्रियं वयो जरदृभ्यो दधाति श्रियं वसारामृतत्तमाजन्भवन् सत्यासामिधामि तद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामादधाति प्रकृत्यो सन्दत्ते सन्धीयते प्रजया पशुभिः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्
శ్రీ స్వామివారి యొక్క పట్టాభిషేకంలో ప్రధానమైన ఘట్టం ఏమంటే ఈ యొక్క పట్టాభిషేకం. రాజ్య పాలన చేసే వాళ్ళందరూ కూడా రాజులే. అయితే ఈ పట్టాభిషేకం జరగాలంటే చతుస్సాగర పర్యంతం కూడా రాజ్యాన్ని కలిగి ఉండాలా. అటువంటి రాజ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి. లక్ష్మీదేవి స్వరూపం. రాజ్యం అంటే లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారినే పట్టం అంటారు. దాని కిరీటంలో ఎవరైతే ధరించుంటారో వాళ్ళే చక్రవర్తి. కాబట్టి చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం అన్నారు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారికి శ్రీ లక్ష్మీదేవి పట్టాభిషేకంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని పట్టం అంటారు. అటువంటి పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో స్వామివారికి సమర్పణ జరుగుతుంది. లక్ష్మీ అమ్మవారు 2 విధములు, విద్యాశ్రీ రాజ్యశ్రీ అని. విద్యాశ్రీ అంటే విద్యా విజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా విద్యాశ్రీ. రాజ్యశ్రీ అంటే ఈ యొక్క పట్టాభిషేకంలో ఉన్న అమ్మవారు. ఈ యొక్క అమ్మవారిని స్వామివారి కిరీటంలో సమర్పణ చేస్తారు. దీన్నే పట్టాభిషేకంలో ప్రధానమైనటువంటి విధిగా తలంచి ఋష్యాదులందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఓం నమో వెంకటేశాయ. नमो भजं वै श्रवणाय कुर्महे सहे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि वरुणाध्रुवं देवो बृहस्पतिः इन्द्रश्चादित्रराष्ट्रं धारयताम् मुहूर्तमुहूर्तस्तु अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव देवाप्नोति सर्वं जयति लङ्कोसरेन्द्राय महानीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूराय सार्वभौमाय राजा रामचंद्र भगवान के रामचंद्र महाराज को जय जय, भूमि तनया पति की जय जय।
స్వామివారి యొక్క పట్టాభిషేకంలో ఈ పట్టాభిషేక దిక్పాలకుల మంత్రాలన్నీ కూడా హోమం చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల అందరికీ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి అంతా కలిగి శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం ఆశీర్వచనం లభిస్తుంది. ఓం ఆదిత్య ఓం భూ ఓం భువః ఓం శుభః ఓం మహ ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తచ్చ వితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ ఓం ఆపోజ్యోతిర సమృద్ధం బ్రహ్మభోర్భవస్సు వరో శ్రీ గోవింద 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 అస్యాం సుపదిదో అస్య దేవదేవస్య శ్రీ పదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామినః పట్టాభిషేక మహోత్సవ కంజకర్మణి ఉక్త హోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ భరత్పదేన మన్యస్వ అతో దేవా అవందనా యదా విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యాత్ సప్తధామ విస్వాహా విష్ణుర్విచక్రమే త్రైధారదే పదా మూఢమధ్యభాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాప్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పతే ఇంద్రత్యయుజ్యత్సఖా స్వాహా కృష్ణా పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి చోరజః విదేవ చక్షురాదదగ్గ స్వాహా విప్రాదో విపన్నవో జాగృవాగం దస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా విష్ణుసర్వేణామతి పరమ పురాణః పరో లోకానామతితోజితాత్మన్ భవతో భవాయ స్వాహా సర్వసర్వేషామంతరాత్మాదస్తుస్తస్తు జంగమో జంగమానా విభూనాం విభవోద్భవాయ స్వాహా జ్యోతిర్వాపారమాత్మికం సార్వం విశ్వభవం భవాయ ప్రభూతం ప్రాహిన్ పరంపరాయ సుగతం కృతాయ తత్మేవరాయ ఇదే స్వాహా ఆయామీశోరహితో భరంజై రాం రాం వహంజా ఆహితః రాయాత్మతిం రాం రాం ధరతే దరిద్రీరాం వహతో వహాయ స్వాహా ఆయామీశోరహితో భరంజై రాం రాం వహంజా ఆహితః రాయాం పతిం రాం రాం ధరతే దరిద్రీరాం వహతోత్వహాయ స్వాహా బ్రహ్మశబ్ద ప్రణవ ప్రధాన శబ్ద శబ్దాంతరాత్మా నిత్యో వియత్త ప్రతిరం ప్రగామ రాజావత్యం ప్రతరంబ కుర్వన్ భూయో భూత్యై అదరంతరాయ స్వాహా మాతృమూర్తి పరమ పరచ త్రిగుణంజుషాణ సకలం విధత్తే త్రిధాత్మా త్రిధా విదధే సమస్తం త్రిధాత్రిరూపం సకలంతరాయ స్వాహా యత్వా కృతమపృతంచరాణాం యత్సర్వనిష్టమజరం సమస్తం యత్పశ్యమానమాత్మా విదుషానమంతఃసుప్యానవిగమ్యమానాయ స్వాహా సంతోషమంగే కుశలం విదాయ సాకృతం కృణ్పతే క్రీతుకుం సుఖాంతం కకుత్పతే కామచరంచరాయ స్వాహా రమణ జ్యోతిషంతి యం దేవా పరమం పవిత్రం భవిష్యం జాతిషు ప్రణదా ప్రదానా సూరయోజపంతో యోగినః సూక్ష్మే సుప్రదర్శనే పశ్యంతేశ్వరాయ స్వాహా పద్మాస్య వక్షా పరమస్య పుణ్య పద్మాజనిత్రీ పరమస్య వాసః సూక్ష్మం సాత్రం స్వయమాదధానః సావిత్రరూపం పరమం చ పుణ్యక్క స్వాహా కన్నాని దత్తాంతపదోతి హర్త స్వయం ఫలక్రేమృతగే మృతాయ స్వాహా పరమాత్మా పరమాగరి పరం బ్రహ్మ పరం యోగం పరమాత్మానం మన్యే అదరయ్యో గ్రహమన్నం వాయవే స్వాహా గణానాం ప్రథమ సప్తదానామోర్ధవాజో అన్నమదరగ్గసృజం భూతారం వైరయత్వాహురగ్నే హవ్యం మరుభ్య స్వాహా స్రవంతగోత విదానమింద్రం దదాతో లోకమింద్రం మన్యే పితరం మాతరం చత్వాహా భక్తగోత్పతి పృథివ్యా అయం అపాగోరేతాగుం సుజన్మది స్వాహా భాగోదార పృథివీం జమోధ్యామరసూర్యః సర్వమృత్యుత్తేన ప్రాణానాం వాయూనాగ స్వాహా నమస్తే నిరుతజే ఘనతేజాయ తస్మై వితృజబంధనా యమనయత్వం సవితా దేవోత్తమానేకే విరోధయాయ స్వాహా ఏదేశరం వరుణజే సహస్రం యజ్ఞజా పాశావతతా పురుత్రా ఏభ్యో న ఇంద్రస్య విదోద విష్ణుర్విద్యే దేవావంతంతు వరదస్వస్యా స్వాహా ప్రథమో దేవతానాగుంసోऽస్య ప్రజాం పశూన్ పాహి అతో దేవేభ్య పటపర్యో వైవదవత్వత్యత్తుత్పాహ మరుద పరమాత్మా పరమాగతి పరం బ్రహ్మ పరం యోగ పరమాత్మానం మన్యేతరయ్యో గ్రహమన్నం వాయువే స్వాహా కోభేరకారక్షోరాజేణ ప్రేషితా గ్రహముఖం సదానజో గచ్చంతే ఛందోపరిదాకృతాన్ స్వాహా ఈశానత్ సర్వలోకానాం త్ర్యంబక సర్వ విజ్ఞాన గణపతియో భవోద్భవాయ స్వాహా
क्षेत्रे भोद्भवस्वरीशाय लोकानां ईशाय वामदेवाय स्वाहा नागराजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा जनकराजाय विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा नागराजाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् स्वाहा आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अजितेन्द्रमग्गस्ताः सर्वरेण्वमग्गस्थाः सर्वरेन्द्रमग्गस्ताः देवदविद प्राचामेः एतत् होमे स्वर मंत्र तंत्र न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम अतो देवादि षड्वैष्णो होमं होष्ये तेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा तेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणात्तरीरथं यत्वान्यो न विहाकराम् पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पूर्णमत्यभागं तुरे स्वाहा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा कर्माणि पश्यतो व्रतानि वस्मरे युत्यर्थघा स्वाहा परमं पदगो सदा वश्यन्तु सूर्यः देवदक्षरादक्क स्वाहा प्रादोविपण्यवो जागृभागो दस्तमिन्दुरे यत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवः स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदविद प्राचामीः एतत् कर्म साकुण्य उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यत्वा सरस्वतेन मन्यस्व देवदविद पृथुभागों यदत्य कर्मणोत्किरीर्दं यत्पान्यो निमहाकरो अग्निस्तत्तिष्ठकरत्वित्वान् सर्वज्ञस्पृष्टहोदं सूतं करदोतु स्वाहा पेट्टकृते हुताहुतीनां कामानागं समर्थयत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नयेन पतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवरूपपुष्पैः स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा नमो दक्षस्तत्पुनराहार्जातवे जावदर्शने स्वाहा पुनरक्षरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनरेश्वरायं चक्षुरात्तपक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा भेदरञ्जरिष्टे स्वाहा जय स्वाहा गौराज्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनाभ्यः स्वाहा जय स्वाहा समृद्धे स्वाहा जय स्वाहा येदोष्येति धीमहि स्वाहा तेजोमयि देह स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा वाद्यं सप्तधाम प्रियाणि प्रजापतये स्वाहा स्वाहा वेदभक्त स्वाहा जोर्भक्त स्वाहा पृथ्वी भक्त स्वाहा ओषधवनस्पतिगन्धर्वाद्रव्यभक्त स्वाहा अग्निर्जीर्णं वीरजीर्णं ज्योतिर्णं देवदेनं भक्तां प्रभुषाकृते नमादित्यैर्वदवत्समर्तिः आद्यदेधो इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथ्वीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तां पोषणस्तृप्यन्द्रवातृत्यन्तृप्यन्तां मेदग्नदप्रामः चाक्षयमतृप्यन्तां प्रदेन्ममग्गस्ताः अनुमतेन्ममग्गस्ताः सरत्वदेन्ममग्गस्ताः देवदविद प्राचामीः पवित्रमति पवित्रं मे भूयात् स्वाहा
प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वारण्यान् परिसमोक्ष्य कूटाश्चेत् गन्धीन् विसृज्य अपौपस्कृत्य अभ्युप्रोक्ष्य आप्यागन्तामापमोदुर्योमृतां सुधियत्रिवं गच्छतुदोनो वृत्तिमेरयत्पाः शुद्ध्यन्तां देवसुदनगं शुद्ध्यन्तां देवसुदनं भूतिस्मातेर्लभुतेन त्यगं कर्मयज्ञं भवेत् अक्षमार्थयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगायुषं जमदग्ने कत्यवत्यत्रिगायुष यत्देवानां त्रिगायुषं तन्मे तत्त्रिगायुषं दीर्घायुत्पाय बलाय सुताय सुतं च वर्तते त्रिगायुषौ दीर्घायुत्वाय बलाय जटाय जलञ्जवत्तरे प्रजानिषम् अरङ्गमामभोजत्यक्षिगागिरिन्बुधाहं तेजस्वी भूयाजं यत्तेनाहं वच्चस्वी भूयाजं मदिमेधां मदिप्रजां मदियज्ञस्तेजो दधातु मदिमेधां मदिप्रजां मदीन्द्रयन्द्रयं दधातु मदिमेधां मयप्रजां मयशोर्योद्धातो दधातु अग्नेन यशुपधाराजे अस्मान् विश्वानेव परस्य मे जग्धापजते नमः कृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वचरद्धारमपाकृते भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनमुदादना देव परिपूर्णं ददस्तुते प्रायश्चित्तान्न शेषानि होमकर्मात्मकानि वै स्मरणं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रवृते स्वभावात् यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीयज्ञपुरुषनारायणार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः प्राज्ञार्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मसोमाभ्यां नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्माणमुद्वारयामि सोमुद्वारयामग्निपुरुषाय नमः पुनः पाद्यार्घ्यां समर्पयामि गुडोपहारण्यवेरजामग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुपरजायमानदक्षरजेः सुपरजायमानदक्षरजेः भोद्भवः सुपरजायमान सक्षजजेः రామచంద్ర స్వామి వారు తన యొక్క పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో తన భార్య అయినటువంటి సీతామాతకు అమ్మవారికి తనతో పాటు అవసరం లేకపోయినా కూడా అడవులకు వచ్చి ఎంతో శ్రమ కోర్చి తన విజయానికి కారణభూతురాలైనటువంటి తన యొక్క ధర్మపత్ని అయినటువంటి సీతామాతకి స్వామివారు ఈ యొక్క హారాన్ని బహుమతిగా సమర్పిస్తున్నారు. ఓం శ్రీయే జాత శ్రియా నిర్యాయ శ్రీయం వయోజనేతృభ్యో దధాతి శ్రీయం వసానామృతత్వమాయ భవంతి సత్యాసమిధా పితృ
सक्रादा अत्र सखाय सख्यानि जारते भद्रेशान् लक्ष्मीर्निहिराभिभायि भूतो भूते दुरदे प्रविष्टस्य भूतानामधिपतिर्बभूव तस्य मृत्योचरति राजसु यगुं सराज राज्यमनुमन्यतामिदौ తన యొక్క పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో తన తనయుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి వారు తనతో పాటు అరణ్యాలకి తమ్ముడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి వారు తనతో పాటు అరణ్యాలకు వచ్చి ఎంతో శ్రమపడి తనకి పట్టాభిషేకం జరిగితే చూసి ఆనందించాలని చెప్పి తనకి ఆత్మ అయినటువంటి లక్ష్మణస్వామి అయిన తన తమ్ముడు శ్రీ లక్ష్మణస్వామి వారికి శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారు ఈ హారాన్ని ఈ యొక్క పట్టాభిషేక శుభ సమయంలో బహుకరిస్తున్నారు. श्रिय आनिर्गत्रिगम्बयोदरिद्रुभ्यो दधाति श्रीगम्बदाना अमृतत्वमायन् भवन्ति धज्जातमिथ वितत्तान् तपजोदिहर्तान् स्वजम्भुरग्रे मृतगे मृताय यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हि जानिर्विबुधा विराजन् तम्मयिलोकायस्यानि नाग्नो विपिनानि पतन्तु. ఆంజనేయ స్వామి వారికి, ఓ ఆంజనేయ, నువ్వు నాకు చాలా సహాయం చేశావు. మా తమ్ముడుకు మృత్యు యొక్క సమీపంలోకి వచ్చినప్పుడు సంజీవ పర్వతాన్ని తెచ్చి నా తమ్ముడిని రక్షించావు. నాకు నా భార్య సీతాదేవి అమ్మవారికి కూడా నువ్వు తన యొక్క దీంతో జాడ తెలిపి ఉంగరాన్ని వారికి సమర్పించి చూడమని సమర్పించి మా యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని కూడా తెలిపావు. నాకు ఈరోజు ఈ పట్టాభిషేకం జరుగుతుందంటే నీ యొక్క శ్రమ భక్తి అన్నీ కూడా కారణం. కాబట్టి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఈ యొక్క ముత్యాల హారాన్ని స్వామివారు సమర్పిస్తుంటే పక్కన సీతాదేవి కూడా చాలా సంతోషంగా ఆయనకి ఇంకా కూడా మనం ఎంతో సత్కారం చేయాలంటే ఆంజనేయ స్వామివారు నాకు ఇవన్నీ ఏమి వద్దు, రామనామం ఒక్కటే చాలని చెప్పి స్వామివారికి నమస్కరిస్తున్నాడు. ఓం పరమాత్మా పరమాగతి పరం బ్రహ్మ పరయ్యోగో పరమాత్మానం మన్యే అదయ్యోహమన్నం వాయవే మరుతో గణానాం ప్రథమ సప్తధానాం మూర్ధవాయో అన్యమదరక్షుశ్రియో హోతారం వైరయన్ బాహురగ్నే హవ్యం మరుభ్యః. ஸ்ரீராம ஜெயராம பக்தர்களே, அதோ அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு ராஜ்யஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி வித்யா ஸ்ரீ சரஸ்வதி என்ற அந்த ராஜ்யஸ்ரீ பட்டத்தை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ராம 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 நாம தாரகம் ராமச்சந்திர வாசுதேவ பக்தி முக்தி தாயகம் ஜானகி மனோகரம் சர்வலோக நாயகம் சங்கராதி சேவியமான புண்ணிய நாம கீர்த்தனம் என்று அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியுடைய பட்டாபிஷேக கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த புண்ணிய நாளில் அந்த பகவானுடைய பட்டாபிஷேகத்தை நாம் சேவித்து அந்த கருணா கடாட்சத்தை பெற்றுள்ளோம். இதை அமர்த்து செய்ததற்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இதோ கோதண்டராம சுவாமி ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண ஹனுமன் சமேத கோதண்டராம சுவாமி பரபிரம்மனே நமஹா என்று அந்த கோதண்டராமனை நாம் சேவித்தோம்.
ராமன் பரதனுடைய சரணாகதியை அங்கீகரித்து உத்தமமான ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தார். ராம லக்ஷ்மி பரத சத்ருக்னனுடைய ஜடைகளை நீக்கினார்கள். ஸ்நானம் செய்த பிறகு ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு சத்ருக்னன் வஸ்திரங்களும் ஆபரணங்களால் அலங்காரம் செய்தார். சீதா பிராட்டிக்கு கூட நன்கு அலங்காரம் செய்வித்து அழகு பார்த்தார் கௌசல்யா. பிறகு அயோத்தியில் தசரதருடைய மந்திரிகள் வசிஷ்டர் ஆகியவர்கள் ராம பிரானுடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கு வேண்டிய திரவியங்களை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டார். பக்தர்களே, இதோ வண்ண வண்ண மலர்களால் வண்ண வண்ண மின் விளக்குகளால் அந்த கோதண்டராம ஆலயத்தையே அலங்கரித்துள்ளார் கலைஞர்கள். அவர்களுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீராமா ஜெய ராமா ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராமா ஜெய ராமா ஜெய ஜெய ராமா, ராம பிரானுக்கு ஜெய் என்று நாமும் சொல்லுவோம். विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ